But that's true. अगर वो पानी नहीं फेंका होता तो वो उसको जो ये होता कि निकालो इसको, that wouldn't have made sense. It's a personal humiliation that she's reacting to basically. तो वो पानी तो makes sense. वो one of the few things that does make sense. I got lots of phone calls and everybody was like, तुम्हारे साथ असल जिंदगी में कोई ये करे तो तुम क्या करोगी? Like, I don't know, कभी हुआ नहीं. Nobody's done that. कभी भी किसी ने फेंका पानी नहीं. Why would anybody do it? So that was, we sat down, talked about that, हो गया. फिर कौन सा एक point था जब मेरी एक line थी आमना, my favorite line. हाँ, मैं बता दूँ अभी हम यहाँ पहुँचे हैं कि वो कह रहा है कि मुझे वलीमा आप करें ताकि इस महक की ज़िंदगी आसान हो, और वो कह रहे हैं वलीमा नहीं होगा, और अब शेरू वापस आ गया है. यहाँ तक स्टोरी पहुँची है. हाँ, your favorite line. I think अगर मैं बता दूँ तो शायद मैं बोल चुकी हूँ सीन में. चलो नहीं भी बोला तो क्या हुआ, I'm telling you. So I call my mother and I say something of the sort, मम्मी आपको तो पता है मुझे इन गरीब लोगों से कितनी घिन आती है. मेरी I'm like मैं नहीं बोल रही. ये ऐसे कौन बात करता है, तो बहुत बुरी बात है. ये तो कोई बहुत ही बुरा इंसान होगा वो भी नहीं ऐसे बोलेगा. साथ पुश्तों के नवाब तो ऐसे नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता, और वो भी नवाब दिखा रहे हैं. So I was like मैं नहीं बोल रही. And then the director sat me down and said, आयशा जी ये आप नहीं हैं, ये आपका कैरेक्टर है, आपको बोल दें, कैसे बोलना चाहती हैं. So मैं गुस्से में थी. I'm like मैं ऐसे ही बोलूँगी, इसको यही बोलूँगी. So I said it. Sometimes there is that. But yeah, I mean, no, the thing about Farwa is that she's a negative character. She's portrayed as a negative character, and she's perceived as a negative character. There's nothing wrong with that. These people do exist in the world, and you know, we need to see negative, and frankly speaking, they add flavor. Negative characters add that little bit of flavor to an otherwise straightforward story. It's when you give a negative character packaged as a hero, that is the problem. Asal problem to wo hai. Okay, I saw this is an abusive character. Yeah. Danish's Shamsher is an abusive character. वो खुद कहता है. And again, my point was, अगर मेरे अब्बू से कोई ऊंची आवाज़ में भी बात कर देता था तो I would get deeply offended कि आप मेरे अब्बू से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं. I would take it personally. And I was just thinking कि आपने इस ड्रामे में दुर्रे के शहूद को मारा है, उनको जेल भेज दिया. It's unforgivable. For me, it's unforgivable. So मुझे नहीं समझ में आया कि एक टॉक्सिक अब्यूसिव कैरेक्टर को अपने एक हीरो बना के आशिक बना दिया. And it's wildly popular in people. They love Danish's character. I know. I mean, look at the numbers. Absolutely. And between men and women both. It's not like that women are standing up and saying, no, this is harassment. This is sexual harassment. Yeah. You know, this man is stalking. Physical harassment. Yes. Yeah. Harassment on so many levels. So many levels. But all the comments I get, they love Danish, they love his character, they think this is what love is because this is what Southeast Asia, the subcontinent cinema has been like that. Yeah. Like our old Pakistani films were the biggest expression of love is the hero slapped the heroine, she slapped him back, and they've fallen in love. So our love is just really aggressive and really abusive. Would you call it passionate? No, it's disgusting. Please, it's disgusting. Restraining order hona chahiye. Can we differentiate between passion and disgusting? Consent, right? Consent. सबसे ज़रूरी चीज़ तो कंसेंट है. Consent. अगर दो लोगों के बीच का प्यार अग्रेसिव भी है और कंसेंट है तो that's passion. बट अगर दो लोगों के बीच में एक बंदा is not a willing partner और दूसरा अपने आप को enforce कर रहा है तो it's harassment. It's disgusting. It's criminal actually. It is. It's criminal behavior. Yeah. It is. Absolutely. And I also feel like we not only glamorize and package that, we also glamorize the marriage, the institute of marriage to the extent when you are in an abusive, toxic relationship, you still don't walk out because divorce is still frowned upon. Yeah. Whether it's a man or a woman. For a woman, it's worse. Yeah. But ड्रामों में हम यही दिखा रहे हैं, इतना कुछ हो जाता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं तो आप बेटी पैदा हो जाती है तो आप टॉक्सिक मैरिज में वापस आ जाते हैं. शादी होती है तो एकदम से ऑटोमेटिकली मोहब्बत कैसे हो जाती है.
उसी इंसान से जिससे आप नफरत करते हैं शादी से पहले उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते. शादी होती है तो सब सही हो जाता है. How? You tell me. I don't know. How does that happen? Haven't you studied like therapy or something? Haven't you been trained to decipher this? I was going to ask you that you studied this and you should be qualified enough to analyze why people are in love with these characters. And it's not just Shamsher and Kaisi Teri Khudgarzi. It's like so many actors. I mean, so many roles that Feroz Khan has played, for example. Toxic heroes in 2, 3, 4, 5 dramas. दानिश का पहला थोड़ी है, इससे पहले भी 2-3 ड्रामा में दानिश ने ऐसा ही किरदार किया है बिल्कुल, जिसमें अग्रेसिव शादी हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है. तो people love these characters. People love You them. tell me why. Are they in love with the stars, with the actors, or do they just feel it's so romantic? I think they think it's romantic. They think so? They think it's romantic. That is the way That's to... very disturbing. It's worrying, actually. It is. It is. Because again, dating is taboo. Meeting men and women together, putting boys and girls together is taboo. Yeah. So they hide it and do it. When you hide things, when it's undercover, there's that element of wrong. And then you take it to another extreme. A wrong is a wrong. Two wrongs don't make a right. Here we put two wrongs together and try to make a big right to justify everything. But where the psychology of these characters is concerned, the running joke between us is that एक अलग किताब लिखनी पड़ेगी हमारी कौम के लिए. पाकिस्तान की साइकोलॉजी, पाकिस्तान इंडिया दोनों की, इनकी साइकोलॉजी के लिए अलग किताबें, एक नए फ्रॉइड को जिंदा होना पड़ेगा who just write about us, just us. Because इंडिया में भी आपने देखा Kabir Singh was like this. Kabir Singh था क्या था? I don't know, I haven't seen That Shahid Kapoor did this character. Was extremely toxic. यही exactly यही चीज़ थी. सबने कहा कि oh God, ये तो हीरो नहीं है. How dare this misogyny at its worst. हम तो पेल रहे हैं, हर रोज ड्रामों में यही कुछ हो रहा है. और औरत इतनी लाचार कब से हो गई? पता नहीं वो कहीं से. अच्छा हम ना, अच्छी बात ये है, आई एम डिफेंडिंग माई सेल्फ. अच्छी बात ये है कि क्योंकि मैं मेन लीड का कैरेक्टर नहीं कर रही हूँ, तो वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन होता है ना कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं आगे, वो मुझ पे नहीं आता. बिकॉज मेरे कैरेक्टर की डेफिनेशन मेरे लिए सीधी सीधी थी इस प्रोजेक्ट में. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको शोल्डर करना है वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर्स जो आपके मेन लीड हैं वो हैं. For me, it was just an amazing learning experience because I was working with Numan Ijaz after such a long time. तो वो हर सीन से पहले मुझे बिठा के रिहर्स करवाते थे. और जिस तरह मैंने कंसीव किया हुआ था वो बिल्कुल अलग था, जो इन्होंने मुझे बताया वो अलग था, जो डायरेक्टर ने बताया वो अलग था. So I had to put all these three together. He actually sits down with artists and talks about scenes, or just you? Just me. Okay. Because I'd ask him, I'm like, अच्छा ये क्या हो रहा है बताएं. And then I'd notice him, I'm like, ये जो आप पहले यूं देख रहे होते हैं, and then suddenly इसका क्या मतलब है, ये क्यों किया आपने.